AI is changing Google Ads faster than most marketers even realize. So some Google Ads job will disappear because of AI, but the highest paid Google Ads specialists may become even more valuable. So हमारा मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि whether AI will replace marketers or not, but the real question is who becomes replaceable. Because ये सवाल मुझे बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिल रहा है कि AI is replacing this thing and what is the future of performance marketer, right? So basically ये वीडियो मैंने बनाई है उस सवाल का जवाब देने के लिए, will AI replace Google Ads specialist? So basically इस वीडियो को मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया है. नंबर फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो ये है कि Google Ads has been moving forward AI for a year, so it is not new AI for Google Ads. सेकेंड है द बटन क्लिकिंग गूगल एड स्पेशलिस्ट इज इन डेंजर. थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि what AI still cannot fully replace. Obviously AI cannot replace everything, there must be something जो कि replaceable नहीं है. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द फ्यूचर ऑफ गूगल एड स्पेशलिस्ट विल लुक वेरी डिफरेंट. नेक्स्ट हमारा होगा व्हाट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, आप किस तरह से इस मार्केट में रहते हुए इवॉल्व कर सकते हैं. एंड लास्ट हमारा है कि व्हाट स्किल्स यू शुड लर्न राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि जो बिगेस्ट थ्रेट है गूगल स्पेशलिस्ट को वो कंपटीशन नहीं है बट इट इज़ AI. एंड ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ गूगल एज जॉब आर गोइंग टू डिसअपियर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज ऐसा इसलिए हो रहा है कि AI इज़ ऑलरेडी डूइंग एड कॉपी, एनालाइजिंग डेटा, वो रिपोर्ट्स भी जनरेट कर रहे हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन सजेस्ट भी कर रहे हैं, कीवर्ड लिस्ट भी बिल्ड कर रहे हैं, ऑडियंस भी क्रिएट करके दे रहे हैं हमें, और इवन कि हमारी कैंपेन्स को वो ऑटोमेट पर मैनेज भी कर रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर इज AI चेंजिंग गूगल एड्स बिकॉज इट ऑलरेडी हैज. सो द रियल क्वेश्चन इज विल AI रिप्लेस गूगल एड्स स्पेशलिस्ट कंप्लीटली और विल इट सिंपली रिप्लेस द मार्केटर्स हु रिफ्यूज टू इवॉल्व. सो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगी ऑनेस्टली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन जो कि एक्टिवली गूगल एड्स मैनेज कर रहे हैं, बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली AI टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं एवरी सिंगल डे. सो बिकॉज ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज चेंजिंग फास्ट. And if you are a freelancer, media buyer, agency owner or aspiring digital marketer, you need to understand what is happening right now. So section number 1 हमारा है Google Ads has been moving toward AI for a year. So a lot of people think AI suddenly entered in Google Ads. So ऐसा नहीं है, but the truth is Google has been slowly automating advertising for a year. So you can just think about it कि हमारे पास ऑलरेडी स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है जो कि स्टार्ट में तो बिल्कुल ब्लैक बॉक्स थी, अब तो हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग आना शुरू हुई है. उसकी रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड है जिसमें हमें पता नहीं होता कि गूगल किस हेडलाइन को किस डिस्क्रिप्शन के साथ वो शो करेंगे. ऑटोमेटेड टारगेटिंग है, प्रिडिक्टिव ऑडियंसेस है और ऑटोमेटेड रिकमेंडेशंस हैं. सो बेसिकली गूगल्स का एंटायर सिस्टम जो है वो एवरी ईयर मशीन लर्निंग ड्रिवन होता जा रहा है. मैनुअल कैंपेन मैनेजमेंट इज स्लोली डिक्रीजिंग एंड ऑनेस्टली गूगल वांट्स एडवर्टाइजर्स टू रिलाई मोर ऑन ऑटोमेशन. और ऐसा इसलिए है कि the more data the system controls, the smarter the platform becomes. So yes, AI is already managing a huge portion of Google Ads today and this trend is only going to accelerate. So आपको इसमें backward नहीं होना है, आपको इसके अंदर आगे ही बढ़ना है. So basically ये system backward नहीं होगा, ये system day by day accelerate करेगा towards AI and automation. So अब हम बात करेंगे कि the button clicking Google Ads specialist is in danger. So now here the uncomfortable truth and obviously ये बहुत से लोगों के लिए हार्ड होगा टू एक्सेप्ट कि बहुत से गूगल स्पेशलिस्ट आर स्टिल डूइंग वर्क दैट AI कैन ऑलरेडी ऑटोमेट. सो फॉर एग्जांपल अगर आप में से अगर वो सारे मीडिया बायर जो कि मैनुअल रिपोर्टिंग करते हैं, कीवर्ड ग्रुपिंग करते हैं, सर्च टर्म एनालिसिस और ये सारे काम वो खुद कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, एड कॉपी जनरेट कर रहे हैं, ऑडियंस सजेशन, बिट एडजस्टमेंट या फिर ऑप्टिमाइजेशन की रिकमेंडेशन भी वो मैनुअली चेक कर रहे हैं. सो टुडे टूल्स लाइक ChatGPT एंड
Claude can complete some of these tasks in just a matter of minute. So tasks that used to take hours, obviously manual काम करने में time लगता है, and because of that the low skill execution layer of PPC management is becoming less valuable. So if someone's entire career depends only on clicking buttons, exporting spreadsheet, adjusting bits manually, then yes, AI is absolutely a threat for them, because businesses को ये मालूम है कि वो ये सारे काम किसी भी AI टूल के थ्रू बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे टाइमली उसको मैनेज कर सकते हैं. So that question is already happening. So because businesses will start asking, why should I pay someone for work software can already do faster? So obviously उनका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जब एक सॉफ्टवेयर हमें ये काम उससे कम पैसों में उससे कम टाइम में हमें करके दे सकते हैं, so why should I hire a person at a higher prices, right? So that question is already happening. अब हम बात करेंगे उसकी कि what AI still cannot fully replace. So now this is where things get interesting, because despite all the hype, AI still cannot think like a real strategist. AI information को process कर सकता है, but AI still struggle with customer psychology, emotional buying behavior, creative intuitions, offer positionings, understanding market sophistication, business decision making, sales psychology, founder vision. So for example, AI आपको 20 ad की headlines तो लिखकर दे देगा, but can it deeply understand why a customer is hesitating before purchasing? Definitely not fully. So AI can suggest optimization, but can it truly understand the emotional fears, desires and motivations behind buying behavior? Obviously the answer is no. And this is important thing, because marketing is not only about the data interpretation and data analysis. Marketing is human psychology. So the best Google Ads campaign are not built only on the algorithm, they are built on understanding people, and that is still a human advantage. Now we discuss the future Google Ads specialists will look very different, because things are getting changes very fast. So now here is what I personally believe will happen. The Google Ads specialists of the future will not look like the Google Ads specialists of the past. So the old version was something like this: keyword focus, spreadsheet heavy, manually managing campaigns all the day. The future Google Ads strategists will become a system builder, an AI workflow operator, a conversion strategist, a customer psychology expert, a creative thinker, a data interpreter. So in other words, आप कह सकते हैं कि the value is moving away from a manual labor towards strategic thinking. So the marketers who survive this shift will not necessarily be the busiest people, but they will be the people who know how to combine AI plus strategy plus psychology plus business thinking. So that combination will become extremely powerful, and this is the combination that will rule the industry. So the biggest opportunity right now. So now despite all these changes, I actually think this is one of the best time to become a Google Ads specialist. And आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि why? Because we are entering an era where one smart operator can do the work of an entire small team. So today AI can help you analyze data faster, build campaign faster, generate ideas faster, improve productivity, automate repetitive tasks, scale operations. So this means smaller teams can now compete at a much higher level, and that creates massive opportunity, especially for freelancers, consultants and boutiques agencies. The people who learn Google Ads and AI system are going to have a huge advantage over the market, and this opportunity, this advantage would be so huge. Now we will discuss कि वो कौन सी skills हैं that people should start learn right now. So if you are serious about surviving and growing in this industry, so here are the skills that I believe matter most now. Let's say AI prompting, account and campaign strategy, conversion rate optimization, landing page psychology, customer research, analytics interpretation, creative strategy, automation system, business thinking. Because execution is becoming automated, but strategy is becoming more valuable. So that is the shift happening right now. So will AI replace Google Ads specialists
specialists? Some of them, yes, especially the ones who refuse to evolve. But the best Google Ads strategists, I believe they will become even more valuable because AI is not replacing strategic thinking, it is amplifying it. The future of marketing is not humans versus AI, it is humans enhanced by AI. And the people who learn how to combine both are going to dominate the industry over the next few years. And if you are a Google Ads media buyer and you want to learn strategies plus AI automation, so we have our course named Google Ads Strategic Mastery. So in this course you will not only learn the strategies but you will also learn their AI automation tool for Google Ads. So link is in the description, check it out. So if you enjoyed this video, subscribe to the channel for more content on Google Ads, AI workflows, marketing strategy, business growth and the future of digital marketing. And comment below, do you think AI will replace most marketers or will it simply change the way we work? I would love to hear your thoughts.